Okay, where is the doubt in this question? सर इसमें हाइट नहीं दी हुई है सर, Right. नॉर्मली जैसे हाइट दी होती है, तो इसमें कैसे हमें आगे बढ़ना है सर, डाउट। सेम मेथड सेम रहेगा। ब्रेड्थ सर को इसमें डी, ना सर कार्गो कार्गो वेट पर मीटर निकालने में तकलीफ हो रही है सर। सो ब्रेड्थ को बी और हाइट को एच लेना है। बट सर उसमें सर वो भी नहीं दे, स्टोरेज फैक्टर भी नहीं दे रखा ना, तो सर जैसे हम कार्गो वेट पर मीटर निकालते हैं वॉल्यूम अपॉन स्टोरेज फैक्टर करके, तो स्टोरेज फैक्टर भी नहीं है, तो फिर उससे वो निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन सर स्टोरेज फैक्टर के साथ दिए होते हैं, तो हम लोग वैसे सॉल्व कर लेते हैं, सिमिलर राइट ट्रायंगल्स वगैरह करके, फिर राइट कार्गो का वेट पर मीटर। बट इन राइट दिस क्वेश्चन स्टोरेज फैक्टर इज नॉट गिवन राइट। एंड द हाइट इज ऑल्सो नॉट गिवन। सो कार्गो वेट पर मीटर कैसे निकालेंगे सर, उसका डाउट था सर। एक बार वो क्लियर हो जाएगा तो आगे का तो सिंपल ही है। ओके ओके ओके। So you have length of the vessel as 40 meters and a light ship weight as 160 tons, and she's got cargo. How much is the quantity of cargo? सर सर 200। 200 टन। Cargo on board is 200 tons, which has a certain slope at mid length, and it slopes basically. So this is my barge. This is my slope. This is my edge. Right. So supposing ये मैं लेता हूँ. So now I need basically, so मेरे पास height है and मेरे पास breadth भी नहीं है, which is small b, right? I don't have that also. So that is also my variable. So what are my variables? B, H, and you said storage factor भी नहीं दिया हुआ शायद, SF भी नहीं दिया हुआ. So storage factor भी नहीं पता मुझे, वो भी मेरा वेरिएबल है. तो बेसिकली मुझे किसी इस तरीके से निकालना है ताकि मेरी ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएं किसी तरीके से, तभी मैं ये सॉल्व कर सकता हूं. मेरे पास एक हिंट है, तो टोटल कार्गो. सो इफ माय टोटल कार्गो इज 200, द कार्गो is volume divided by the storage factor. So the cargo weight is 200
volume of this will be half into height into 40. This will be the area of the triangle into the breadth divided by the stowage factor. Correct? So 20, 20 cuts here, 10. So height into breadth is equal to 10 times the stowage factor. I have one ratio, one equation. So एक मेरे पास इक्वेशन ये है यहां पे. Now the weight per meter I know is equal to volume per meter divided by stowage factor. Volume per meter is length into breadth into height divided by stowage factor. Length is 1 meter. B into H divided by stowage factor. B into H divided by stowage factor. I have a value of 10. Can I substitute here? Yes, sir. So I substitute from here, I put it over here. So weight per meter I can get as 1 into 10. Or in other words, 10 tons per meter. Where will this be acting? This will be acting where the height is h. What is the height at h? It is at the center. So the weight per meter at the center, that means at Charlie, will be 10. Are you with me? Yes, sir. Okay. So this is wherever the height is h. This is the weight that is acting. So what will be the weight per meter acting at alpha? And also at delta? 0. 0. And now if I introduce two more points in between, A, B, C, D, so I call them as E and F, supposing. What will be the weight per meter acting at echo or foxtrot? 5. Correct. 5. Why? H by 2. H by 2. Do you copy this? Yes, sir. So कहने का मोटा मोटा मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन को मैं कैसे भी घुमाऊं, मेरे को अपने बेसिक फंडे नहीं भूलने,
कि मैं कैसे बेसिक्स में जा रहा था। और इसमें फर्क क्या किया था, मैं वो ट्रायंगल यूज करके कार्गो ऑन बोर्ड निकालता था जब मुझे स्टोरेज फैक्टर पता होता था। यहां पे इसने मुझे सीधा कार्गो की क्वांटिटी दे दी, तो अब मुझे बैकवर्ड जाना पड़ेगा। और मेरे वेरिएबल्स क्या हैं, बी, एच एंड स्टोरेज फैक्टर, वो मेरे वेरिएबल्स हैं। तो उसकी कोई इक्वेशन बनाई मैंने, और उसको कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट जरूर करना है मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में। तो मेरा प्रोसीजर वही रहने वाला है जो मैं यूज टू हूं जिसको करने के लिए, खाली ये एक वो और एलिमेंट दे दिया मुझे। एंड देन नाउ यू शुड बी एबल टू डू इट, आई थिंक। बाकी सारा सर अगर ये आधा ट्रायंगल लेते ABC तो भी हाइट H ही होती, क्योंकि अगर मैंने एबीसी होती तो हाइट एच होती, लेकिन एसी जो है फिर वो आधा होता, फिर एसी वुड हैव बीन 20। ओके सर, फिर वो वेट पर मीटर E का निकलता। हाँ, अगर मैं हाफ ट्रायंगल लेता तो वेट पर मीटर E का निकलता, विच वुड हैव बीन 5। नहीं, मैं समझा नहीं कैसे, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू समझ से। गया सर, समझ गया। फुल ट्रायंगल लेंगे सर और H हाँ, निकालेंगे। फुल ट्राइंग, सी मुझे तो वॉल्यूम से मतलब है ना, मेरे मेरे को तो पूरा, क्योंकि मेरे पास कार्गो वेट जो है वो मेरे पास 200 है। अगर आप आधा लेना चाहते हो तो ये 100 होगा, इफ यू वांट टू डू दैट। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। बट उसको छेड़ाखानी करने की जरूरत नहीं है। कार्गो वेट अपने को इतना दिया है, वो तो उतना ही रखो, उसको आधा मत करो, इसको आधा मत करो, राइट सर। है ना। सर ये वेट पर मीटर चार्ली 10 के स्क्वायर एक बार बताएंगे प्लीज। दोबारा बताना कौन सा वाला। सर वेट पर मीटर चार्ली 10 कैसे हो गए? वेट पर मीटर, एच ये वाला, चार्ली ठीक। हाँ जी ये सर। वाला, अच्छा ये वाला, ओके। सो सो मैंने निकाला, यहां तक तो ओके था, यहां तक ओके था, राइट। अब ये यस। वेट, मेरी लेंथ 1 मीटर है, राइट। ये मेरा जो वेट पर मीटर है, जो मेरी वैल्यू आ रही है 10, ये किसकी है, उसकी है जिसकी हाइट h है, बिकॉज मैं h को यूज कर रहा हूं। यस सर। तो बिकॉज आई एम यूजिंग द हाइट h, my height is h at which point? It's a Charlie. चार्ली। So therefore, it will give me the weight per meter at Charlie. For a length of 1 meter and a height is h, and BH by SF ratio is 10. This basically is giving me a ratio over here. It's a ratio of breadth to height divided by storage factor. That ratio is 10. ठीक है सर, समझ गया। That is it. और एको और फॉक्सट्रॉट मैंने सिमेट्री से निकाला है। और अगर मैं लंबा करने जाऊं तो वो h/2 होगा, फिर वो मैं वो कर सकता हूं, बट आई डोंट, आई वांट टू सेव टाइम। ठीक है, इज दिस ओके? यस सर, ओके सर। मैं जरा ये अप्रैल के बैच को पास ऑन कर दूं ये क्वेश्चन। लेट मी जस्ट फॉरवर्ड इट टू अप्रैल बैच। Okay, April batch question has been sent to you also. यस सर मिल Okay. All right. Next. Any other? सर एक और क्वेश्चन था। Okay.
Sir, which all conditions BM is not zero at the last point? Like कैंटिलीवर हो गया और एक स्लोपिंग कार्गो, उसके अलावा कोई और कंडीशन होती है सर जिसमें BM might not be zero at last point? एट लास्ट पॉइंट मतलब ये वाला, जी सर. यहाँ पे तो बीएम जीरो होता है. सर जैसे कैंटिलीवर में नहीं होता. हाँ, और कैंटिलीवर में नहीं होता, लेकिन इस पॉइंट पे तो बीएम जीरो है. इस पॉइंट पे भी बीएम जीरो है. राइट सर, इसमें जीरो है सर. हाँ, तो डोंट डोंट से कि इसमें ये जीरो नहीं है. ये तो जीरो है. खाली द ओनली प्लेस वेयर दिस थिंग इज इन द कैंटिलीवर. जो कैंटिलीवर होगा, ये बीम है, राइट, और ये सपोर्टेड नहीं है बिकॉज इसको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है. ये फ्री एंड है, इसको फ्री एंड कहते हैं. फ्री एंड. So whenever a beam has a free end, she will not, BM will not be zero. Your question is, at which points does a BM not be zero? That's what you're saying. Yes sir. A BM will not be zero along the length of the beam also. Several points are there where it is not zero. हमने वो कैलकुलेट किए हैं. तो ये क्वेश्चन कुछ ठीक नहीं बना. नहीं सर, लास्ट पॉइंट जैसे अभी कंफर्म ना कि लास्ट वाला पॉइंट जीरो आ रहा है, BM एट लास्ट पॉइंट शुड बी जीरो, दैट मींस वी आर ऑन द राइट ट्रैक. हाँ, तो कैंटिलीवर इज ओनली कंडीशन वेयर वी गेट, वी माइट नॉट गेट जीरो, वी विल नॉट गेट जीरो एट द लास्ट पॉइंट. at the free end. फ्री एंड, करेक्ट सर. अदर कंडीशन BM शुड बी जीरो फॉर कंफर्मेशन की क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं हम. करेक्ट, बिल्कुल ठीक. अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड. बिल्कुल थैंक ठीक. यू. हाँ जी. Any other doubt? All okay? All right. Let's come to another topic. Very, very popular question. In fact, a favorite for phase 2. It's called as inclining experiment. So let's start with that. हम थोड़ा सा आसान भी है, तो हमने बहुत टफ कर लिए टॉपिक. अब थोड़ा सा ब्रीदर ले लें कोरोना के टाइम पे. हाँ जी सर, जरूरी है, जरूरी है थोड़ा सा. बहुत जरूरी है। तो तो इसलिए हर चीज का एक ब्रीदर होता है, तो ये ब्रीदर है कि he is the inclining experiment is the good guy. So let's मतलब कुछ तो इजी है सर। हाँ, मतलब जिंदगी में कुछ तो आसान भी होना चाहिए ना. ये थोड़ी कि हर चीज में बाउंसर ही बाउंसर संभाले जा रहे हैं. तो अब थोड़ा सा आसान वाला काम करते हैं. So let's do inclining experiment. Okay, inclining experiment. So basically, inclining experiment is done on a vessel. The aim of the inclining experiment is to calculate kg of a ship in lightship condition. Kg of a vessel in lightship, and therefore the GM of a vessel in lightship condition. That's the aim of inclining experiment, to calculate the kg in lightship condition and GM in lightship condition. So quite obviously, this is done. This is done before your hydrostatic particulars are made, because ये kg lightship एक हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स की किताब में एक कंडीशन होती है. करेक्ट.
सो ये प्री हाइड्रोस्टैटिक टेबल्स बनाने की कंडीशन से पहले वाली है। इसका मतलब है ये हम कब करते हैं? ये जनरली दिस एक्सपेरिमेंट इज डन व्हेन वी आर डूइंग अ यार्ड डिलीवरी। दिस इज ऑफ अ न्यूली बिल्ट वेसल। जब हम यार्ड डिलीवरी कर रहे हैं, न्यूली बिल्ट जहाज है, तो हम ये करते हैं एक्सपेरिमेंट। और कब करते हैं? और जब मेरा जहाज हैज अंडरगॉन अ मेजर कन्वर्जन। मेजर कन्वर्जन दैट मीन्स मेरा जहाज सिंगल हल से डबल हल बन गया। तो so therefore my lightship of the vessel undergoes a change. So if my lightship of the vessel changes, my obviously my kg will also change. When I've undergone a major conversion, single hull to double hull, or or when my vessel has undergone some major steel renewals, इतना मेरा जहाज रप्चर हो गया था या जो था, तो the major steel renewal had been done, which altered my lightship and therefore which altered my kg of the lightship. So these are the various stages during which this is done. So this kind of an experiment is generally a part of the sea trials. So when the sea trials are done, this is a part of the sea trials. And it's conducted by the yard, by the shipyard. So generally such a condition will be, matlab, there will be least amount of liquids on board, and obviously minimum personnel. Minimum personnel on board. तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट जब होता है, तो vessel is in a sea going condition. Vessel is in a sea going condition. So जो example मैं दूंगा, that would be an example. I'm taking it of a bulk carrier because it is easier to explain that, or a cargo vessel. But the same story can apply to a tanker. It can apply on a LNG, LPG, etc. Different type of a ship. I am taking an example of a cargo vessel ताकि वो आसानी है उसको explain करने में. So this is a view, a top view of the largest hatch top at midship. This is a view of the largest hatch top view at midship. So
अगर मेरा नॉर्मल बल्क कैरियर है तो दिस कुड बी होल्ड नंबर 4 और होल्ड नंबर 5, right? Likewise, there would be a similar story in a tanker, similar story in a LPG, LNG, gas, etc. But I am taking a bulk carrier or a cargo vessel. तो ये उसका व्यू है, टॉप व्यू. सो इसमें ये हैच टॉप पे एक वुडन बैटन डाला जाता है. वुडन प्लैंक कह लो, वुडन बैटन कह लो. ये दिस इज अ वुडन प्लैंक जो कि सेंटर लाइन पे हैच टॉप के ऊपर रखा गया है. तो हैचेज आर ओपनड अप एंड ये एक वुडन प्लैंक उसके हैच टॉप के ऊपर में सेंटर लाइन पे डाला गया है. और इस 3 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स लिए जाते हैं और इनसे एक रस्सी नीचे होल्ड में लोअर करी जाती है. ये एक रस्सी है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के एंड पे एक पेंडुलम है, बॉब. इसकी लेंथ L डिफाइंड है. So this is a string. String has got a bob. It's acting like a pendulum. Length L is defined and it is going right down to the hatch top. तो टैंक टॉप तक जा रहा है ये. और टैंक टॉप के ऊपर में ये मेरे स्केल्स हैं, ये ग्रेजुएशन है जो इसकी डिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे. So it is something very similar to the inclinometer जो हमारे टैंकर्स में जब हम टॉप ऑफ कर रहे होते हैं तो एकोमोडेशन में लगा हुआ होता है कॉन्ट्रैप्शन कि व्हेन वी आर टॉपिंग ऑफ वी वांट टू सेल आउट इन अपराइट कंडीशन, तो वो लिस्ट हम चेक करते हैं. सो ऑन यूजुअली ऑन टैंकर्स वी हैव दैट. सो दिस इज समथिंग सिमिलर टू दैट स्टोरी. ओके, तो शुरू में ये रीडिंग 0 दिखाएगा तीनों में. बिकॉज जहाज अपराइट है. अब एक एक्सटर्नल कार्गो, एक्सटर्नल वेट W1, W2, W3, W4 ये रखे जाते हैं. दे आर प्लेस्ड यूजिंग अ शो क्रेन. सो W1 to W4 are external weights which are equal, which are placed using show crane on main deck. And they're equidistant and they're equally placed so that the vessel will be upright. The list will be 0. अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट? Any doubt, anybody so far? No, sir. Okay. All right. So ये डाल दिया गया. अब using the show crane वेट की मूवमेंट होगी. So point number 11. So using show crane
W1 will be moved from port to starboard. ये क्रेन उठाएगी W1 को और स्टार्बोर्ड साइड पे W3 के बगल में डाल देगी. तो क्वाइट ऑब्वियसली स्टार्बोर्ड साइड लिस्ट हो जाएगी. एंड सो कॉन्सिक्वेंटली यहां पे डिफ्लेक्शन आएगी तीनों में. सो नेट एवरेज deflection will be noted. Let's call that as x1. So तीनों की डिफ्लेक्शन नोट करी गई, उसकी मीन वैल्यू ली गई, एड ऑल द थ्री, डिवाइड बाय 3, वैल्यू आएगी x1. ठीक है, इज दिस ओके? द मूवमेंट. नाउ नेक्स्ट मूवमेंट W2 किया गया पोर्ट टू स्टारबोर्ड. x2 मेजर किया गया. अब सारे के सारे वेट मेरे स्टारबोर्ड आ गए. अब मैं W3 एंड W4 की मूवमेंट करूंगा. W3 will be moved from starboard to port. X3 will be recorded. W4 will be moved starboard to port. X4 will be recorded and vessel is back to upright. सारे के सारे वेट इधर के इधर चले गए, इधर के इधर आ गए. अदल बदल कर दिए मैंने. अब मैं फिर से वापस शुरू करूंगा. W1 will be moved from starboard to port. W2 will be moved starboard to port. अब मैं वापस ला रहा हूं सारे वेट्स को जो मैंने मूवमेंट करी थी. W3 will be moved port to starboard and W4 will be moved port to starboard. So what have I done? बेसिकली मैंने सारे के सारे वेट्स इधर से उधर डाले, उधर से इधर डाले, अदल बदल किए, फिर वापस इनको वापस अपनी अपनी जगह पे वापस डाल रहा हूं. इन सब की मीन वैल्यू ले ली. सिग्मा x divided by 8 will give me the net average डिफ्लेक्शन. सबको टोटल कर दिया, सिग्मा x डिवाइड बाय 8 कर दिया, मेरे को एवरेज डिफ्लेक्शन जो हुई है वो नोट हो गई. ओके सो फार? एनी डाउट्स? Okay. Now, ये पॉइंट नंबर क्या था? 11 था ये. यस सर. Yes, sir. Point 11. So point number 12. Now, basically, this is theta. Okay. This is 90 degree. This is my deflection. This is my length, the L of the string that she is making. So tan theta is equal to deflection upon small l. But I know that my list formula tan theta is also equal to GG1 upon GM fluid
and GG1 is nothing but WD by W into GM fluid. My list formula. So I equate the two together. So what do I get? Deflection over small l is equal to small w into d upon w capital into GM fluid. What is this small w? The weight which is causing the list. Shift of weight. Yeah, shift of weight. What is small d? Distance moved. Distance The by distance the moved weight. from by the of the weight from port to starboard or starboard to port, whichever be the case. What is capital W? Displacement. Actually, Total. Displacement of the vessel in the condition in which the inclining experiment is being done. And what is GM fluid? The GM of the vessel in the condition in which the experiment is being conducted. Deflection we know, small l we know. My question to you is, am I right now in a lightship condition? no, sir. No, sir. We have weight. We have some weights on board, correct? Yes, sir. So I am in a condition more than lightship. Yes, sir. Okay. So I'm calling this condition as W1. And this is GM1 fluid. Because I'm not in a lightship condition. So therefore, cross multiplying GM1 fluid will be equal to small w, small d upon W1 into deflection upon small l. This becomes my formula from which I can calculate the GM fluid. यहां तक कोई डाउट? सर डिफ्लेक्शन भी मीटर्स में है? डिफ्लेक्शन यूनिट्स की बात कर रहे हो? यस तो सर। ये डिफ्लेक्शन ऑब्वियसली सेंटीमीटर्स में होंगी। जो डिफ्लेक्शन है ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होगी। लेंथ जो है वो मीटर में होगी। तो ये यूनिट्स मुझे संभालने पड़ेंगे डिफ्लेक्शन के। मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज ये तो छोटी होगी ना डिफ्लेक्शन, तो ये मिलीमीटर मतलब या ऐसे सेंटीमीटर क्वेश्चन में में होगी। गिवन ही रहेगा ना सर कि इतना एमएम है या इतना हाँ, सेंटीमीटर है तो आपको आपको अगर न्यूमेरिकल है तो डिफ्लेक्शन दिया हुआ होगा कि डिफ्लेक्शन इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 20 meters. So you will convert the 5 centimeter to meter and then you do the division. ठीक है, is that okay? यस सर। Okay. All right. ये क्या लास्ट पॉइंट नंबर क्या था? So 12, sir. 12 था. So point number 13. Now corresponding to my W1 जो मेरी डिस्प्लेसमेंट इस वक्त है, मैं हाइड्रोस्टैटिक टेबल्स में जाऊंगा. That means I'm talking about Hinship now. Okay.
सो मैं निकालूंगा KM1 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उस डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड इस KM1 में से मैं ये GM1 जो मैंने कैलकुलेट किया फ्लूइड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? Yes, sir. kg flow. ये मुझे KG1 फ्लूइड देगा? यस नो? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, नाउ I know the formula. You remember kg solid plus FSC gives you kg fluid. Remember, we have done it in phase 1, Right, sir. right? Yes, sir. GM में FSC subtract होता है, solid to minus FSC gives me fluid. kg में add होता है, right? So kg1 solid plus FSC1 gives me kg1 fluid. मेरे पास kg1 fluid यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 से आ चुका है, मुझे सॉलिड चाहिए, तो kg1 solid is equal to kg1 fluid. इसको उधर ले गया, माइनस FSC1. आर यू विद मी? Yes, sir. ओके, ओके, नाउ आई विल, ये मेरी kg1 है, दैट मीन्स दिस इज माई kg ऑफ द वेसल solid in my present condition of inclining experiment. So I will now make a vertical moments table. Weights kg, V moments. ये मेरे वेट्स हैं जहाज के, तो मेरी प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? W1, ये मेरी प्रेजेंट कंडीशन है. व्हाट इज माय प्रेजेंट kg? kg1 सॉलिड जो मैंने निकाली यहां से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये मेरे को वर्टिकल मोमेंट्स देगा. इज इट ओके? अब इसमें मैंने एक्सटर्नल वेट्स डाले, ये मेरा एक्सटर्नल वेट है, स्मॉल w. kg ऑफ द एक्सटर्नल वेट क्वेश्चन में दिया होगा. अब मैं ये वर्चुअल डिस्चार्ज कर रहा हूं, जो जो मेरे एक्स्ट्रा वेट्स हैं, माइनस जो मेरे लिक्विड्स हैं जहाज पे, दैट मीन्स अगर मेरा कोई बैलेस्ट है, बैलेस्ट, उसका kg. सर आपने जो डाला उसको भी माइनस किया और जो निकाला उसको भी माइनस किया. दोबारा बोलो. आपने वो फर्स्ट वाला वो स्मॉल w वेट डाला है. ये तो एक्सटर्नल वेट था जो कार्गो, जो मैंने इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट के लिए वेट यूज किया था. अभी उसको निकाल रहे हो सर. अब मैं उसको वर्चुअल निकाल रहा हूं, ये मैं वर्चुअल टेबल बना रहा हूं. वर्चुअल मतलब प्रैक्टिकली नहीं कर रहा हूं, ओके ये कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं मैं. ओके सर. तो ये मैं वर्चुअली निकाल रहा हूं, मैं एक्चुअल नहीं निकाल रहा, ये मैं कैलकुलेशन में निकाल रहा हूं. तो जितना मेरा बैलेंस था जहाज पे, वो उसको पंप आउट कर रहा हूं, उसकी kg, उसको मल्टीप्लाई किया. फिर मेरे जहाज पे कुछ फ्यूल ऑयल होगा 3 दिन के लिए. अगर मैं इंक्लाइनिंग, मैं सी ट्रायल करने जा रहा हूं तो 3 दिन का तो लूंगा, तो वो फ्यूल ऑयल
उसकी केजी, उसको माइनस कर दिया। फिर कोई डीजल ऑयल होगा मेरे जहाज पे, उसकी केजी। फिर कोई फ्रेश वाटर होगा, उसकी केजी, उसको माइनस कर दूंगा। करता जाऊंगा मैं सारी चीजें माइनस। अल्टीमेटली यहां पे जो नीचे आएगा ये क्या होगा? लाइट शिफ्ट। ओके, सो ये मेरे को देगा डब्ल्यू लाइट शिफ्ट। डू यू एग्री ऑन दिस? यस यस सर। ओके, और यहां से जो मिलेगा मुझे मिलेगा टोटल वर्टिकल मोमेंट्स। Are you with me? यस सर। Okay. Point number 16. Total vertical moments upon W lightship will give me what? KG. kg lightship. W lightship corresponding to that, I'll go into the tables. I will read km lightship. That km lightship minus kg lightship will give me what? GM light shift. These are the two things that I wanted. हाँ जी, any doubts? सर 16-17 प्लीज बता दो दोबारा। Point number 16-17. Okay. So यहाँ तक क्लियर था। ये मेरा टोटल वर्टिकल मोमेंट आ गया। ये मेरा डब्ल्यू लाइट शिप आ गया। सो ये टोटल वर्टिकल मोमेंट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू लाइट शिप कर दिया मैंने, जो हम वर्टिकल मोमेंट में करते हैं। तो मेरे को क्या मिलता है? केजी ऑफ द कंडीशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट डब्ल्यू। ओके सर। सो ये केजी लाइट शिप मिल गया। यही डब्ल्यू लाइट शिप के साथ मैं टेबल में घुसता हूं तो मेरे को मिलता है के एम लाइट शिप। उस के एम लाइट शिप में से मैं ये केजी लाइट शिप जो 16 में मिला था उसको माइनस कर दिया, तो मेरे को क्या देगा? जीएम लाइट शिप। ओके सर। बेसिकली मेरे को मैं जब इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट करता हूं, आई एम इन अ कंडीशन विच इज क्लोज टू द लाइट शिप बट इट इज नॉट एक्चुअली लाइट शिप। सो आई कंडक्ट द इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट इन अ कंडीशन विच इज स्लाइटली मोर देन द लाइट शिप। उसमें थोड़े से बैलेस्ट हैं, थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा हेवी ऑयल डीजल ऑयल है, थोड़े से अनपम्पेबल लिक्विड भी होंगे। तो उन सब की केजीज के साथ में करके मैं हाइपोथेटिकली उनको डिस्चार्ज करता हूं, हाइपोथेटिकली, एक्चुअली में नहीं। एंड उससे मैं निकालता हूं केजी लाइट शिप, और वो केजी लाइट शिप इसके बाद में मेरे स्टेबिलिटी पर्टिकुलर्स में रेस्ट ऑफ द टेबल्स बनते हैं। फिर मेरी वो कंडीशंस बनती हैं जो उसमें डलती हैं, और फिर मेरा हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स पूरा का पूरा मेरे को सौंपा जाता है। सर जो वेट्स हम लोगों को माइनस करने क्वेश्चन में दिए होंगे क्या क्या, जैसे हम लोगों ने इसमें फ्यूल ऑयल डीजल ऑयल सब माइनस किया, वो सब क्वेश्चन में दिया होगा ना क्या क्या माइनस करना? वो सारी चीजें दी हुई होंगी, वो सारी चीजें दी हुई होंगी। सो कौन सा वेट इंक्लाइनिंग वेट यूज हुआ, 10 टन 5 टन, वो सारा दिया हुआ होगा। सो सो जनरली जो
पॉइंट नंबर 18, जो स्मॉल डब्ल्यू है, जो वेट इंक्लाइनिंग वेट होता है, जनरली इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/500th of the lightship weight. This is just as a rough guideline. The external weight is approximately 1/500th of the lightship weight. So अगर MV हिंदशिप का lightship weight 5000 टन है, then the inclining weight will be 10 tons. सर ये दोबारा बताएंगे सर रेटिंग कौन सा वाला? पॉइंट नंबर 18, यस सर यस MV हिंदशिप का lightship weight 5000 टन होता है. So MV हिंदशिप का inclining weight will be 5000 divided by 500. Small w will be 10 tons. So 10 टन का inclining weight यूज होगा MV हिंदशिप पे. So if my vessel is a 50,000 tonner, then 100 tons is going to be the inclining weight which is used on my vessel. जी मैम अभी Okay, sir. दिया हुआ So मतलब सर वो W1 W4 सारे मिला के 500 होंगे. correct, the sum total of the whole thing. But जो inclining weight जहाज पे डाला जाएगा वो 1/500th of the lightship weight होना चाहिए approximately. राइट. अब मैंने तो आपको 4 वेट दिए, W1, W2, W3, W4. ये वेरी कर सकता है. कई यार्ड खाली 2 वेट यूज करते हैं, W1 एंड W2 ओनली, एक इधर एक इधर. ठीक है. कई 2 भी यूज करते हैं, कई 4 यूज करते हैं, कई 6 भी यूज करते हैं. ये यार्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, ये वेरिएबल है. सिमिलरली नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हमने 3 यूज करी, ये भी वेरिएबल है. some people will use 2, somebody will use 3, somebody will use 4. That is dependent on the yard. ये वेरिएबल है. सर सपोज जैसे आपने बोला ना, अगर 100 टन जैसे मान लीजिए वेट यूज किया इंक्लाइनिंग वेट यूज के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वेट वो जो W1 W2 W3 वो 100 किलो उसमें डिवाइड रहेगा ना, चाहे 4 पार्ट्स में करो चाहे 3 पार्ट्स में करो, वो डिपेंड करता है. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. वो जो 100 टन है, या तो मैं उसको 50-50 के 2 कर लूं, या मैं 25-25 के 4 कर लूं, वो यार्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, वो वेरिएबल है. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. So let's stop here, and next week we'll do the numericals. So please bring your hinship with you and hinship particulars with you. ठीक है. तो अब इसकी adaptations करेंगे, बस हम बेसिकली अब इसके न्यूमेरिकल इसी के ऊपर होगा. ओके चलो, ओके सर बाय.